चलें, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। सेशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल आप लोगों ने देखा था कि मैम ने आप लोगों को मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे और सेंटेंस कंप्लीशन के ना। तो आज हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं कि जो सिमुलेशन बेस्ड जो टेस्ट होता है उसके अंदर किस दूसरे टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आज इंशाल्लाह हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। देन कल फिर आप लोग जब मॉक टेस्ट देंगे ना, क्योंकि कल हमारा इंशाल्लाह मॉक टेस्ट होगा लिसनिंग मॉड्यूल का, जो कि कल वीक 1 कंप्लीट हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट वीक से दूसरा मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। देन उसके लास्ट डे यानी फ्राइडे के ऊपर हम लोग उस मॉड्यूल के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट कंडक्ट किया करेंगे। ठीक है, लेट मी शेयर माई स्क्रीन। सर काइंडली कोई बता सकते हैं स्क्रीन शेयर हो रही Yes, sir. है? परफेक्ट। चले हम लोग आइल्स टेस्ट सिमुलेशन की वेबसाइट, जो कि आपको रिसोर्सेज के अंदर गिवन होगी, इसका लिंक भी मैं शेयर कर देता हूँ। यहाँ से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, इस वेबसाइट के ऊपर ना हमें दो तरह के मोड्स देखने को मिलते हैं। एक है प्रैक्टिस मोड, जिसमें हम लोग मल्टीपल टाइम्स वॉइस को सुन सकते हैं स्पीकर की ना, और अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हैं। और दूसरा मोड हमारे पास होता है सिमुलेशन मोड, यानी कि इट्स अ टाइप ऑफ रियल टेस्ट सिनेरियो। जब आप लोग आइल्स के टेस्ट में अपेयर होंगे ना, तो उसमें जो आपको सिनेरियो देखने को मिलता है ना, वो बेसिकली सिमुलेशन मोड एग्जैक्टली वही है। यानी कि इसके अंदर आपको सिर्फ ओनली वंस वॉइस आपको सुनाई देगी, उसी के अंदर आपने अपने आंसर्स को लिखना होगा और सबमिट करना होगा। इसमें सिर्फ आप एक ही दफ़ा क्या कहते हैं वॉइस को ना सुन सकते हैं, मल्टीपल टाइम नहीं सुन सकते सिमुलेशन मोड के अंदर। लेकिन हम लोग आज करेंगे प्रैक्टिस मोड के अंदर, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कल इंशाल्लाह मॉक टेस्ट जब हम लोग कंडक्ट करेंगे ना, तो वो सिमुलेशन मोड के अंदर कर लेंगे। तो प्रैक्टिस टेस्ट को इनेबल करते हैं। दैट्स द एड्स। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा काइंड ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अभी जैसे जैसे वो इंस्ट्रक्शंस देता रहेगा वैसे वैसे हम लोग फॉलो करते रहेंगे। गैस इसकी वॉइस। व्हाई इट इज नॉट स्पीकिंग। चलें इसको रिलोड कर लेते हैं। चलें, ये जिस तरह मैंने आपको बताया था ना, प्रैक्टिस मोड है, तो इसके अंदर हम लोग वॉइस स्टार्ट करके ना सुन सकते हैं। तो आप लोग भी अपनी नोटबुक्स अपने हाथ में रखिएगा और साथ साथ ना जो आप लोगों के आंसर्स हैं ना, वो लिखते रहिएगा। फिर एंड में हम लोग इसको वेरीफाई कर लेंगे इंशाल्लाह। तो चलें स्टार्ट करते हैं। This is the IELTS Listening Test, 2024. Part 1. You will hear two friends talking about a guitar group. First, you have some time to look at questions 1 to 6.
These are the questions 1 2 3, ये जो लेबल्स बनाए हैं ना, ये क्वेश्चंस को डिनोट करते हैं 1 to 6. Now listen carefully and answer questions 1 to 6. Hi, Coleman. How are you? Good, thanks. I wanted to have a chat with you because our friend Josh told me that you've joined a guitar group and it sounds interesting. I'd really like to learn myself. Why don't you come along? I'm sure there's room for another person. Really? So, who runs the classes? He's called a coordinator. His name's Gary Matheson. Let me note that down. Gary. How do you spell his surname? It's Matheson. Right, thanks. He's retired, actually, but he's a really nice guy, and he used to play in a lot of bands. Thanks. So, how long have you been going? About a month now. And could you play anything before you started? I knew a few chords, but that's all. I'm sure everyone will be better than me. That's what I thought too. When I first spoke to Gary on the phone, he said it was a class for beginners, but I was still worried that everyone would be better than me. But we were all equally hopeless. Oh, that's reassuring. So, where do you meet? Well, when I joined the group, they were meeting in Gary's home. But as the group got bigger, he decided to book a room at the college in town. I prefer going there. I know that place. I used to go to tap dancing classes there when I was at secondary school. I haven't been since, though, and I can't remember what road it's in. Is it Lock Street? It's just beyond there, at the bottom of New Street, near the city roundabout. Yes, of course. The guitar club is on the first floor in room T347. Right. And when do you meet? Is it at the weekend? We meet on Thursdays. It used to be 10:30, and that suited me well. But now we meet at 11. The class that's in there before us asked if they could have the room for another 30 minutes. Oh, I see. Well, I'd love to come, but I don't have a guitar. Well, you can always buy a second-hand one. There's a website called The Perfect Instrument that sells all kinds of guitars, violins, and so on. I'm sure you'll find something there. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. अच्छा, इस प्रैक्टिस मोड के अंदर हमारा फ्लो ऐसे रहेगा कि हम लोग कंप्लीट 1 to 40 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे, देन लास्ट के ऊपर अपने आंसर्स वेरीफाई करेंगे, और फिर आप लोगों के जो आंसर्स होंगे ना वो भी बताइएगा, देन हम उसे मैच करके देखेंगे. ओके. Now listen and answer questions 7 to 10. So, what's a typical lesson like with Gary? Well, he always starts by getting us to tune our guitars. That takes about 5 minutes. Uh-huh. Some people have an app they use, but others do it by ear.
Gary goes round and helps them. And while he's doing that, he tells us what he's going to do during the lesson. Right. First, we usually spend about 10 minutes doing some strumming. So, is that using... Oh, what are they called? Plectrums? No, we just use our thumbs. Oh, much easier. Gary reminds us where to put our fingers for each chord, and then we play them together. Sometimes we all just start laughing because we're so bad at keeping time. So Gary starts clapping to help us. Do you learn to play any songs? Yes, we do at least one song with words and chords. I mean, that's harder than you think. Oh, I'm sure it is. That part of the lesson takes about 15 minutes. He often brings a recording of the song and plays it to us first. Then he hands out the song, and if there's a new chord in it, we practice that before we play it together, but really slowly. Do you do any finger picking? That's the last 10 minutes of the lesson, when we pick out the individual notes from a tune he's made up. It's always quite simple. That must be hard, though. Ugh, it is. But people like it because they can really concentrate. And if we're all playing well, it sounds quite impressive. The only trouble is that he sometimes gets us to play one at a time. You know, alone. Oh, that's scary. It is. But I've got used to it now. At the end, he spends about 5 minutes telling us what to practice for the following week. Well, thanks, Coleman. I'll go and have a look at that website, I think. That is the end of Part 1. You now have 1 minute to check your answers to Part 1. पहले हम लोग सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं, देन लास्ट के ऊपर ना फिर आंसर्स वेरीफाई कर लेंगे हम लोग. Part 2. You will hear a man called David talking on the radio about his work as a lifeboat volunteer. First, you have some time to look at questions 11 to 16. Now listen carefully and answer questions 11 to 16. I never really planned to be a lifeboat volunteer when I came to live in North Sea. I'd been working in London as a website designer, but although that was interesting, I didn't like city life. I'd been really keen on boats as a teenager, and I thought if I went to live by the sea, I might be able to pursue that interest a bit more in my free time. Then I found that the Lifeboat Institution was looking for volunteers, so I decided to apply.
The Lifeboat Institution building here in North Sea is hard to miss. It's one of the largest in the country. It was built 15 years ago, with funds provided by a generous member of the public who'd lived here all her life. As the Lifeboat Institution is a charity that relies on that kind of donation, rather than funding provided by the government, that was a huge help to us. When I applied, I had to have a health assessment. The doctors were particularly interested in my vision. I used to be short-sighted, so I'd had to wear glasses, but I'd had laser eye surgery 2 years earlier, so that was okay. They gave me tests for colour blindness, and they thought I might have a problem there, but it turned out I was okay. When the Coast Guard gets an alert, all the volunteers are contacted and rush to the lifeboat station. Our target's to get there in 5 minutes. Then we try to get the boat off the dock and out to sea in another 6 to 8 minutes. Our team's proud that we usually achieve that. The average time across the country's 8.5 minutes. I've recently qualified as what's called a helmsman, which means I have the ultimate responsibility for the lifeboat. I have to check that the equipment we use is in working order. The crew have special life jackets that can support up to 4 people in the water, and it's ultimately my decision whether it's safe to launch the boat. But it's very rare not to launch it, even in the worst weather. As well as going out on the lifeboat, my work involves other things too. A lot of people underestimate how quickly conditions can change at sea, so I speak to youth groups and sailing clubs in the area about the sorts of problems that sailors and swimmers can have if the weather suddenly gets bad. We also have a lot of volunteers who organise activities to raise money for us, and we couldn't manage without them. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 17 to 20. Now listen and answer questions 17 to 20. The training we get is a continuous process, focusing on technical competence and safe handling techniques, and it's given me the confidence to deal with extreme situations without panicking. I was glad I'd done a first aid course before I started, as that's a big help with the casualty care activities we do. We've done a lot on how to deal with ropes and tie knots. That's an essential skill. After a year, I did a 1-week residential course, led by specialists. They had a wave tank where they could create extreme weather conditions, so we could get experience at what to do if the boat turned over in a storm at night, for example. Since I started, I've had to deal with a range of emergency situations, but the work's hugely motivating. It's not just about saving lives. I've learned a lot about the technology involved. My background in IT's been useful here, and I can use my expertise to help other volunteers. They're a great group. We're like a family, really, which helps when you're dragging yourself out of bed on a cold, stormy night. But actually, it's the colder months that can be the most rewarding time. That's when the incidents tend to be more serious, and you realise that you can make a huge difference to the outcome. So, if any of you listeners are interested, why don't you give us a call? That is the end of part 2. You now have 30 seconds to check your answers to part 2.
Part 3. You will hear two students called Bella and Don discussing a presentation they plan to do on recycling footwear. First, you have some time to look at questions 21 to 24. Now listen carefully and answer questions 21 to 24. Hi, Don. Did you get the copy of the article on recycling footwear that I emailed you? Yeah, it's here. I've had a look at it. So, do you think it's a good topic for our presentation? Well, before I started reading it, I thought recycling footwear. Well, although it's quite interesting, perhaps there isn't enough to say about it, because we put shoes in recycling bins. They go to charity shops, and that's about it. But there's much more to it than that. I realise that now, and I'm keen to research the topic more. That's great. One of the things I didn't realise until I read the article was just how many pairs of trainers get recycled. Well, a lot of young people wear them all the time now. They've become more popular than ordinary shoes. I know. I guess they are very hard-wearing. But don't they look a bit casual for school uniform? I don't think they're right for that. Actually, I think some of them look quite smart on pupils. Better than a scruffy old pair of shoes. So, do you keep shoes a long time? Yes, though I do tend to wear my old pairs for doing dirty jobs like cleaning my bike. I must admit, I've recycled some perfectly good shoes that haven't gone out of fashion and still fit, just because they don't look great on me anymore. That's awful, isn't it? I think it's common because there's so much choice. The article did say that recent sales of footwear have increased enormously. That didn't surprise me. No, but then it said that the amount of recycled footwear has fallen. It's 6% now, compared to a previous level of 11%. That doesn't seem to make sense. That's because not everything goes through the recycling process. Some footwear just isn't good enough to resell for one reason or another and gets rejected. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 25 to 30. Now listen and answer questions 25 to 30. So, let's find some examples in the article of footwear that was rejected for recycling. OK. I think there are some in the interview with the recycling manager. Yeah, here it is. Let's start with the ladies' high-heeled shoes. What did he say about those? He said they were probably expensive. The material was suede and they were beige in colour. It looked like someone had only worn them once, but in a very wet field, so the heels were too stained with mud and grass to resell them. OK. And the leather ankle boots. What was wrong with them? Apparently, the heels were worn, but that wasn't the problem. One of the shoes was a much lighter shade than the other one. It had obviously been left in the sun. I suppose even second-hand shoes should look the same. Sure. Then there were the red baby shoes. Oh, yes. We're told to tie shoes together when we put them in a recycling bin, but people often don't bother. You'd think it would have been easy to find the other, but it wasn't.
That was a shame because they were obviously new. The trainers were interesting. He said they looked like they'd been worn by a marathon runner. Yeah. Weren't they split? Not exactly. One of the soles was so worn under the foot that you could put your finger through it. Well, we could certainly use some of those examples in our presentation to explain why 90% of shoes that people take to recycling centres or bins get thrown into landfill. What did you think about the project his team set up to avoid this by making new shoes out of the good parts of old shoes? It sounded like a good idea. They get so many shoes, they should be able to match parts. I wasn't surprised that it failed, though. I mean, who wants to buy second-hand shoes, really? Think of all the germs you could catch. Well, people didn't refuse them for that reason, did they? It was because the pairs of shoes weren't identical. They still managed to ship them overseas, though. That's another area we need to discuss. You know, I used to consider this topic just from my own perspective, by thinking about my own recycling behaviour without looking at the bigger picture. So much happens once shoes leave the recycling area. It's not as simple as you first think. And we can show that by taking a very different approach to it. Absolutely. So let's discuss how we're going to split up the present. That is the end of part 3. You now have 30 seconds to check your answers to part 3. About an animal called a tardigrade. Part 4. You will hear a zoology student giving a presentation about an animal called a tardigrade. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Answer questions 31 to 40. For my project on invertebrates, I chose to study tardigrades. These are microscopic, or to be more precise, near microscopic animals. There are well over 1,000 known species of these tiny animals, which belong to the phylum Tardigrada. Most tardigrades range in length from 0.05 to 1 millimetre, though the largest species can grow to be 1.2 millimetres in length. They're also sometimes called water bears, water because that's where they thrive best, and bear because of the way they move. Moss piglet is another name for tardigrades because of the way they look when viewed from the front. They were first discovered in Germany in 1773 by Johann Goetze, who coined the name tardigrade. As I say, there are many different species of tardigrade. Too many to describe here, but generally speaking, the different species share similar physical traits. They have a body which is short and also rounded, a bit like a barrel, and the body comprises 4 segments. Each segment has a pair of legs, at the end of which are between 4 and 8 sharp claws. I should also say that some species don't have any claws. What they have are discs, and these work by means of suction. They enable the tardigrade to cling on to surfaces or to grip its prey. Within the body, there are no lungs or any organs for breathing at all.
Instead, oxygen and also blood are transported in a fluid that fills the cavity of the body. As far as the tardigrade's head is concerned, the best way I can describe this is that it looks rather strange, a bit squashed even. Though many of the websites I looked at described its appearance as cute, which isn't exactly very scientific. The tardigrade's mouth is a kind of tube that can open outwards to reveal teeth-like structures known as stylets. These are sharp enough to pierce plant or animal cells. So, where are tardigrades found? Well, they live in every part of the world, in a variety of habitats, most commonly on the bed of a lake, or on many kinds of plants, or in very wet environments. There's been some interesting research which has found that tardigrades are capable of surviving radiation and very high pressure, and they're also able to withstand temperatures as cold as -200 degrees centigrade, or highs of more than 148 degrees centigrade, which is incredibly hot. It has been said that tardigrades could survive long after human beings have been wiped out, even in the event of an asteroid hitting the Earth. If conditions become too extreme and tardigrades are at risk of drying out, they enter a state called cryptobiosis. They curl into a ball called a tun, that's T-U-N, by retracting their head and legs, and their metabolism drops to less than 1% of normal levels. They can remain like this until they're reintroduced to water, when they will come back to life in a matter of a few hours. While in a state of cryptobiosis, tardigrades produce a protein that protects their DNA. In 2016, scientists revived 2 tardigrades that had been tuns for more than 30 years. There was a report that, in 1948, a 120-year-old tun was revived, but this experiment has never been repeated. There are currently several tests taking place in space to determine how long tardigrades might be able to survive there. I believe the record so far is 10 days. So, moving on. In terms of their diet, tardigrades consume liquids in order to survive. Although they have teeth, they don't use these for chewing. They suck the juices from moss or extract fluid from seaweed. But some species prey on other tardigrades, from other species or within their own. I suppose this isn't surprising, given that tardigrades are mainly comprised of liquid and are coated with a type of gel. Finally, I'd like to mention the conservation status of tardigrades. It is estimated that they have been in existence for approximately 500 million years, and in that time, they have survived 5 mass extinctions. So it will probably come as no surprise to you that tardigrades have not been evaluated by the International Union for Conservation of Nature and are not on any endangered list. Some researchers have described them as thriving. Does anyone have any questions they'd like to ask? That is the end of part 4. You now have 1 minute to check your answers to part 4. जी होप सो आप लोगों को थोड़ा रियल टेस्ट सिनेरियो का आइडिया हो गया होगा। अच्छा, आप लोगों में से कोई बताएगा कि किसने कंप्लीट एमसीक्यूज के आंसर किए हैं, क्योंकि मुझसे कुछ मिस हो गए हैं। तकरीबन कितने हैं? तकरीबन 4 मिस हुए हैं मुझसे। चलें, चैट्स में ठीक है, चलें सबमिट करके देखते हैं आंसर्स।
सेकेंड मीटिंग के कंट्रोल. That is the end of the listening. Here's the score. अच्छा, आप लोगों में से अगर कोई साथ साथ चल रहा हो मेरे, तो आप लोगों के कितने हैं स्कोर? माइक ओपन करके बताएगा कोई, या चैट में बता दें? Anyone? जी सर, इसके हमें आंसर्स पता नहीं चलेंगे कि हमारा कौन सा आंसर गलत हुआ है? जी जी, वो देखते हैं आंसर, लेकिन उससे पहले आप लोगों का आइडिया ले लें कि आप जी लोग मैंने कितने हैं. जो है ना वो अभी सिर्फ पार्ट 3 सॉल्व किया, इसमें मैंने कुछ शेयर भी किया, 21 क्वेश्चन आई गेस। चलें, 35 मैम आयशा के. कांग्रेट्स मैम. इसका मतलब फुल फोकस से आप कर रही थी सॉल्व. चलें, कोई बात नहीं, जिसके मिस हुए. इट्स अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस. कल भी हम लोग जब मॉक टेस्ट करेंगे ना, और बेहतर आइडिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं. चलें, इसके आंसर्स हम लोग देख लेते हैं. रिव्यू योर आंसर्स. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में से कितनों के सही हैं? सर मेरे ठीक है। सारे सही हैं मैम आपके? यस सर। चलें, कॉन्ग्रेट्स. अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ नोट की है कि एस और ई जी। एस को ऐड करने से भी आपके आंसर में फ़र्क पड़ता है. यस यस। अगर आप मतलब जिस तरह मैंने यहाँ पे एस नहीं किया, मिस हो गया मुझसे, सिर्फ बिगनर लिखा हुआ है, तो ये मेरा आंसर इनकरेक्ट कंसीडर हुआ है. जब तक मैं इसके साथ एस नहीं लगाऊंगा तब तक ये क्या कहते हैं, करेक्ट कंसीडर नहीं होगा. इसी तरह ये दो भी मुझसे मिस हो गए थे, तो समझ ले कि इनकरेक्ट काउंट होंगे ये. चलें, दूसरी टाइप पे देखते हैं हम लोग. 11 से स्टार्ट करते हैं. अच्छा, इनमें से कितने होंगे सही हैं? 11 to 16. ये ठीक हुआ है मैम हुमैरा का. चलें, कोई बात नहीं मैम, प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें. हम सब यहाँ सीखने के लिए ही हैं. मेरे 4 ठीक है। चलें, दैट्स गुड. अच्छा, इस टाइप के तो आप लोगों को आइडिया होगा, हम लोग अपने एजुकेशन के अंदर भी इस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से वाबस्ता होंगे. इनका तो चलो हमें आइडिया होगा. अ, एक नई टाइप देख लेते हैं कि जिस तरह चूज द टू बेस्ट आंसर. एक सिनेरियो दिया गया है दो स्पीकर्स के दरमियान, और इनमें से दो बेस्ट आंसर्स को हमें चूज करना होता है. इट्स अ काइंड ऑफ न्यू प्रॉब्लम फॉर यू. ये इस तरह के भी क्वेश्चंस टेस्ट के अंदर आपको देखने पड़ सकते हैं. अच्छा, और इस तरह के क्वेश्चन ना, ये सारे सिचुएशन बेस्ड होते हैं, यानी कि इनमें से आपका एक भी फोकस थोड़ा सा आगे पीछे हुआ तो एक आपका सही हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा. तो इससे भी मार्क्स वगैरह पे इफेक्ट पड़ता है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. 21 से स्टार्ट करते हैं. इनमें से कितनों के सही हैं? कोई भी माइक ओपन करके बता दे. सर मेरे 2 ठीक है। तो ठीक है, ओके. एनीवन एल्स? मैम हमारा के भी टू ठीक है. ओके. व्हाट. अच्छा, इस तरह की टाइप आप लोगों ने पहली दफ़ा देखी होगी कि बेसिकली है तो ये चूज़ द करेक्ट आंसर की टाइप, लेकिन इसके अंदर आपको सामने कुछ रीजंस गिवन होते हैं, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस उन रीज़न को आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके प्लेस करना होता है.
अब जिस तरह यहाँ पे समझ लें कि रीज़न है द शूज़ वर ब्रांड न्यू। अब यहाँ से मैं इसको ये ड्रैग करूँगा और यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस ना आइल्स के टेस्ट के अंदर आते हैं। 29 30 वही सिंपल एमसीक्यूज। आगे देख लेते हैं, ये भी सेंटेंस कंप्लीशन के। अच्छा, यहाँ पे नोट किया होगा आप लोगों ने, सिर्फ एक के की वजह से मेरा आंसर गलत हो गया। के की जगह अगर मैं एस लगा देता तो डेफिनेटली इट वुड बी ट्रू। तो इस तरह की जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, एस और ई एस की एडिशन, इन सब चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है आपके आंसर्स के ऊपर ना। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा भी अगर फोकस आगे पीछे हुआ ना तो आंसर्स के ऊपर आपके इफेक्ट पड़ेगा। चलिए, आंसर्स आप लोगों ने देख लिए होंगे। अब माइक ओपन करके बताइए कि किसका कितना स्कोर आया है। सर मेरे लास्ट 7 ठीक है। लास्ट 7 ठीक है। तो स्कोर यस। कितना है आपका? और मैंने उसमें तो नहीं देखा, मैं पेपर पे कर रही हूँ। पेपर पे करें थी, चलें कोई मसला नहीं है, काउंट कर लीजिएगा। ओके। अच्छा, होप सो आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि किस तरह का हमारे पास सिनेरियो होता है, किस तरह का हमारे पास इन्वायरमेंट होता है रियल टेस्ट के अंदर। ये तो चलें प्रैक्टिस टेस्ट था, इसके अंदर हम लोग वॉइस को मल्टीपल टाइम्स सुन सकते थे पॉज करके। देन जो समझ नहीं आती हम लोग रिवाइंड करके दोबारा सुन लेते। लेकिन एक्चुअल टेस्ट के अंदर ऐसा नहीं होता। एक्चुअल टेस्ट के अंदर एक ही फ्लो में आपको वॉइस कंटिन्यू रहेगी, आप लोगों ने उसी फ्लो को पकड़ना होगा। अगर आपका फ्लो टूट गया, समझ लें आपका मतलब एक क्वेश्चन तो जो गलत हो रहा है उसके आगे वाला भी आप सुन नहीं पाएंगे और वो भी गलत हो जाएगा अल्टीमेटली। अच्छा, इसके अंदर जो हमारे पास कन्वर्जेशनल सिनेरियोज होते हैं ना, जब एक या एक से ज़्यादा स्पीकर्स हमारे पास बात कर रहे हो। फॉर सपोज हमारे पास स्पीकर 1 है और स्पीकर 2 है। अब ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चंस पूछ रहा है और जो आंसर दे रहा है, तो जो आंसर दे रहा है ना उसी के आंसर के अंदर ही जो हमारा जो एमसीक्यूज है ना वही आंसर हो। कभी कभार ऐसा होता है कि जो हमारे पास करेक्ट आंसर होता है ना, वो क्वेश्चन पूछने वाले के भी क्वेश्चंस में मिल जाता है हमें। और सपोज कि क्वेश्चन पूछने वाले ने कोई टाइम बताया कि एट 11 PM, एट 11 AM, तो वो रिक्वायर्ड था, क्या कहते हैं, इस हमारे एमसीक्यूज के अंदर कि किस टाइम पे ये चीज़ हुई है। तो अब वो आंसर वाले ने नहीं वो टाइम बताया, वो टाइम किसने बताया, क्वेश्चन पूछने वाले ने। क्वेश्चन पूछने वाले ने कि एट 11 PM मैं यहाँ था फॉर एग्जांपल। तो वो जो 11 PM है ना, वो क्वेश्चन पूछने वाले के आंसर के अंदर है। लाजमी नहीं होता, इस तरह की सिचुएशन हमारे पास आ जाती है। तो इन चीज़ों को भी अपने माइंड में रख के चलना होता है। आई होप यू गेट द पॉइंट। यस। किसी को अगर समझ ना आई हो तो दोबारा पूछ सकता है। सबको समझ आ गई है? यस सर। चलें, सही, दैट्स गुड। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन? 4 to 5 मिनट्स में हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, देन फिर हम लोग मैथ्स वाले कुछ क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करते हैं। क्योंकि कल काफ़ी पार्टिसिपेंट्स को इशू आ रहा था कि मैथ वाले क्वेश्चन ना दोबारा सॉल्व करवाए जाएं। दैट्स काइंड ऑफ ट्रिकी वन, तो उन चीज़ों को देखना पड़ता है। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये 4 मॉड्यूल्स है ना, तो इनके जी अंदर जी। इनके अंदर से किस मॉड्यूल से हम ज़्यादा बैंड ले सकते हैं मतलब लिसनिंग में या स्पीकिंग में या राइट रीडिंग में, किस में हम ज़्यादा मतलब आसान होगा बैंड्स लेना, कि हो जिसमें हमारा ज़्यादातर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो किस में ज़्यादा है।
फॉर सपोज अगर मैं लिसनिंग के अंदर अच्छा हूँ, तो लिसनिंग की मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की है, मल्टीपल टाइम्स, 10 दफ़ा 15 दफ़ा, और बाकी मॉड्यूल्स की मैंने कम की है, 2 या 3 दफ़ा बस इसको ट्राई करके देख लिया है। तो जाहिर सी बात है लिसनिंग की मैंने प्रैक्टिस ज़्यादा की होगी, या ज़्यादा पॉडकास्ट वगैरह, या ज़्यादा सुना होगा चीज़ें मूवीज़ वगैरह में से फॉर सपोज। तो उस मॉड्यूल के अंदर आपके जो बैंड हासिल करने के चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और वैसे भी एज़ कम्पेयर टू अगर देखा जाए तो रीडिंग मॉड्यूल थोड़ा आसान होता है, अगर हम लोग सिर्फ थोड़ा सा फोकस करें ना, और इन एक दो टिप्स का ध्यान रखें, तो दे आर हाईली स्कोरिंग, हम लोग ले सकते हैं। बाकी राइटिंग मॉड्यूल की बात की जाए तो इट्स टोटली अबाउट योर ग्रामर, कि आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स तो नहीं है, आपकी कोहेशन कैसे, यानी कि आपके जो आइडियाज़ हैं वो आपस में कनेक्ट कर रहे हैं या नहीं, आपका फ्लो कैसा है, आपकी आउटलाइन कैसी है, आपका बॉडी पैराग्राफ कैसा है, आपने कंक्लूजन दिया है या नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें राइटिंग में मैटर कर रही होती हैं। स्पीकिंग टोटली आपके फ्लो के ऊपर। स्पीकिंग में मोस्टली ये होता है कि हम लोग ग्रामर के ऊपर इतना फोकस नहीं रख रहे होते, सिर्फ हमारा फ्लुएंसी के ऊपर फोकस होता है स्पीकिंग के ऊपर ना, तो उसमें ग्रामर भी थोड़ा आगे पीछे हो जाना है तो वो मैनेज हो जाता है। आई होप यू गेट द आंसर। जी सर, शुक्रिया। जी, कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा चले हम लोग मैप लेबलिंग का सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि सेंटेंस कंप्लीशन का मल्टीपल चॉइस का तो आपको आइडिया हो गया। मैप थोड़ा सर बहुत ट्रिकी हो जी जी। सर ये सेक्शन बिगनर्स के लिए है कि जिन्होंने पहले ट्रेनिंग की हुई है उनके लिए? नहीं, ये बिगनर्स के लिए है, ओके, थैंक यू सर। जो मतलब कि आइल्स सीखना चाह रहे हैं, उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है क्या होता है, वो उन्हीं के लिए सेशन। चले हम लोग मैप लेबलिंग वाला सॉल्व करते हैं, उसको देख लेते हैं ताकि उसकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा हो जाए। अच्छा इसका। You will hear a guide at an art museum talking to a group of visitors. First, you have some time to look at questions 17 to 20. अच्छा इसका लिंक भी मैंने चैट में शेयर कर दिया, तो आप लोग साथ साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे म्यूज़ियम का। Now listen and answer questions 17 to 20. Okay, that was something about the collections, and now here's some more practical information, in case you need it. Most of the museum facilities are downstairs in the basement, so you go down the stairs here. When you reach the bottom of the stairs, you'll find yourself in a sitting area with comfortable chairs and sofas where you can have a rest before continuing your exploration of the museum. We have a very good restaurant which serves excellent food all day in a relaxing atmosphere. To reach it, when you get to the bottom of the stairs, go straight ahead to the far side of the sitting area, then turn right into the corridor. You'll see the door of the restaurant facing you. If you just want a snack or if you'd like to eat somewhere with facilities for children, we also have a cafe. When you reach the bottom of the stairs, you'll need to go straight ahead, turn right into the corridor, and the cafe is immediately on the right. And talking about children, there are baby changing facilities downstairs. Cross the sitting area, continue straight ahead along the corridor on the left, and you and your baby will find the facilities on the left-hand side. The cloakroom, where you should leave coats, umbrellas, and any large bags, is on the left-hand side of the sitting area. It's through the last door before you come to the corridor. There are toilets on every floor, but in the basement, they're the first rooms on the left when you get down there. Okay. Now, if you've got anything to leave in the cloakroom, please do that now, and then we'll start our tour. You now have half a minute to check your answers.
आई होप ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। चलें इसको सबमिट करके देखते हैं। चलिए आंसर से रिव्यू करते हैं। जी, आप लोगों में से वो कोई बताएगा कि किसके कितने सही हैं और मैंने क्या गलती की है? एनीवन? अच्छा, मोहम्मद यूसुफ का कमेंट आया है। DFCD। पहला वाला तो F होगा, रेस्टोरेंट का। अच्छा, कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि ये जो करेक्ट आंसर आए हैं उसके सिनेरियो के हिसाब से किस तरह इंटरप्रेट करना चाहिए इस ग्राफ को? एनीवन? सर, हाँ, जो कैफे है, कैफे उसने कहा था स्टेयर्स से राइट साइड पे है, तो स्टेयर्स से राइट साइड जो है वो एच ही बनती है, जबकि हमने जो ई चूज किया था वो स्ट्रेट जाके राइट साइड पे था। सही, ये गलत हुआ है मेरा। स्ट्रेट से राइट साइड जो है कैफे की एच बनती थी। बिल्कुल, यू आर राइट सर। एंड बाकी रेस्टोरेंट, बेबी चेंजिंग, क्लॉक रूम। और रेस्टोरेंट में मैंने वो शुरू से मुझे भूल गया उसने क्या कहा था। कैफे का मैंने जो है वो फोकस से जरूर किया। कोई और अगर इसके बारे में बताएगा तो वो प्लीज। चले एनीवन एल्स, किसको ये मैप समझ ना आया हो या डायरेक्शन समझ नहीं आई हो? हेजिटेट नहीं हो, माइक ओपन करके पूछ सकते हैं आप लोग। कोई जज नहीं कर रहा आप लोगों को। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हैं आप। कुछ चीज़ ना समझ आई हो या डायग्राम समझ नहीं आई हो म्यूजियम की। सबको समझ आ गई है? चलें, दैट्स ओके। अच्छा, मल्टीपल चॉइस करें या नहीं? क्या कहते हैं आप लोग? सर, चैट में क्वेश्चन है कि लेफ्ट एंड राइट को क्लियर कर दे और डायरेक्शन। एक सेकेंड, मैम मजीहा का क्वेश्चन है, सर लेफ्ट एंड राइट को क्लियर कर दें प्लीज। अच्छा, सबसे पहले मैम मजीहा और बाकी सबके लिए कि आप लोगों ने डायरेक्शंस को माइंड में रखना है हमेशा। प्रैक्टिकल अप्रोच की अगर बात की जाए ना, तो ऑटोमेटिकली हमारे जो फ्रंट फेसिंग होती है ना, यानी कि हम जहाँ खड़े हैं उसके बिल्कुल सामने, वो होता है नॉर्थ। देन हमारे राइट साइड पे ईस्ट। देन हमारे बैक साइड के ऊपर वेस्ट। और हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर साउथ होता है। तो ये डायरेक्शन आप लोगों ने खुद को उस जगह पे रखते हुए ना कंसीडर करनी है। अगर आप कभी भी भूल जाए ना किसी भी सिनेरियो के अंदर, आप लोगों ने खुद को एक जगह विजुअलाइज करना है और ये डायरेक्शन सामने रखनी है कि आपके सामने वाला नॉर्थ है, आपके राइट हैंड साइड ईस्ट, आपके बैक हैंड पे वेस्ट, और आपके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर साउथ है। ठीक है। तो सबसे शुरू में उसने बात की कि डाउन द स्टेयर। उसने स्टार्ट ही कहाँ से किया? स्टेयर से। तो फॉर सपोज आप स्टेयर्स के बिल्कुल सामने खड़े हैं, तो आपके सामने होगा स्टेयर्स जो आपका नॉर्थ है। ठीक है।
स्टेयर से उतर के आप लोग नीचे गए, फिर आगे वही जो जिस तरह उसने डायरेक्शन बताई, तो उसी तरह आप लोगों ने वो माइंड के अंदर विजुअलाइज करके वो फॉलो करते रहना है। आई होप मैम वजीहा गॉट द आंसर। मैम वजीहा, क्लियर हुआ आपको? सही। मैम हुमैरा, आपको भी क्लियर हो गया होगा होप सो। बस आपने हमेशा याद रखना है कि आपके सामने वाला नॉर्थ, राइट हैंड साइड पे ईस्ट, आपके बैक हैंड साइड पे वेस्ट, और आपके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर साउथ। कभी भी इसी तरह की सिचुएशन आ जाए ना, तो आप खुद को उस जगह पे रख के तो इस तरह डायरेक्शन का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। या आप मैप लेबलिंग के भी जिस तरह आइल्स के अंदर हमारे पास क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें भी इसी तरह का सेम सिनेरियो आप लोग अप्लाई करके तो इजीली डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर वो उस मैप के ऊपर लेबल होता है कि नॉर्थ कहाँ पे है, ईस्ट कहाँ पे है, वेस्ट कहाँ पे है, साउथ कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई और सवाल किसी का? कोई क्यूरी, कोई मसला, कोई समझ ना आ रहा हो, या आज के लेक्चर में कोई चीज़ समझ ना आई हो? कोई भी माइक ओपन करके बता दे। अच्छा, कोई कंक्लूड करेगा, समराइज करेगा कि आज हमने लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा और क्या क्या किया, सिर्फ एक दो लाइनों के अंदर, फिर हम इस सेशन को रैप अप करते हैं। कोई भी। सर मैं कर देता हूँ। जी जी, प्लीज़। सर जो सेशन हमारा स्टार्ट था उसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जैसे कि एक गिटार वाली क्यूरी थी, उसमें एक वॉइस जो है वो हमने सुनी, और उसके अकॉर्डिंगली हमने जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की थी अपनी लिसनिंग एबिलिटी को चेक करने के लिए। और इसी तरह आगे हम चलते गए। तो जो सेकंड हमारा सेशन, उसमें हमने मैप को जो है वो किया कंसीडर, और ये देखा है कि मैप के अंदर जो डिफरेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, वो अकॉर्डिंग टू जो ऑडियो थी, उन पॉइंट्स के ऊपर क्या क्या चीज़ें थी, लाइक रेस्टोरेंट था, कैफ़े था, बेबी चार्जिंग फैसिलिटी थी, या क्लॉक रूम था। तो उसके उसके अकॉर्डिंगली हमने अपना स्कोर चेक किया। बेसिकली ये हमारा एक जो है वो और लिसनिंग टेस्ट की जो है वो प्रैक्टिस था। जी सर। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। जो शुरू में हमने चीज़ें की थी वो बिल्कुल एक समझ लें क्या कहते हैं रियल टेस्ट जैसा एक सिनेरियो था, कि उसके अंदर आपके पास बिल्कुल 1 से लेके 40 क्वेश्चंस होते हैं और इस तरह वो वॉइस चल रही होती है, आप लोगों ने आंसर करना होता है। तो उस पूरे पैटर्न को हमने सिमुलेट करके देखा कि किस तरह का एनवायरनमेंट हमें देखने को मिल सकता है रियल टेस्ट में, और उसको हमने फिर क्वेश्चन सॉल्व किए और आखिर में क्या कहते हैं हमने इवेल्युएट किया कि कितने क्वेश्चंस आउट ऑफ 40 हमारे सही हुए। ठीक है। और सेकंड हमने देखा कि मैप लेबलिंग के कुछ सवाल उसे किस तरह अटेम्प्ट किया जा सकता है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो माइंड में रखनी चाहिए। तो दैट्स इट। तो कल इंशाल्लाह हमारे वीक 1 का एंड होगा। उसमें भी हम लोग को एक कंप्लीट, आज जिस तरह हम लोगों ने प्रैक्टिस मोड किया ना, कल हम लोग ट्राई करेंगे सिमुलेशन मोड। यानी कि उसके अंदर सिर्फ आपको एक ही गो के अंदर, एक ही फ्लो के अंदर वॉइस से स्टार्ट हो जाएगी और वो चलती रहेगी। ठीक है। तो उसके अंदर तो हम लोग फिर एंड में इवेल्युएट करेंगे कि कितना स्कोर हम लोगों ने हासिल किया है। सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग मीटिंग को एंड करते हैं। एनीवन? क्वेश्चन तो नहीं है किसी का?
जी सर, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है, कहीं पहले हम मीटिंग एंड करते हैं। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं इंशाल्लाह इसी टाइम के ऊपर। अच्छा।